Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last class, I have discussed with you petty cash book and the content of the petty cash book, that why we need the petty cash book and what is the difference between cash book and petty cash book. We have already done this. Now, in the today's class, I will just focus on the class practicing questions of the petty cash book. So I'm requesting you all to open your manuals with me so that you people can solve the question with me right now in the class. This is the question on your book page number 128. This is a question which is appear on your screen. This is the first year book, PT Wala. Um, here on the book page number 128. I would like to mention the page number over here. This is your book page number 128. Okay. So book page number 128. On book page number 128, this question is available. I would like to start the question. First of all, we have the following is a summary of petty cash transactions of five-star printing, who established the petty cash fund on Impress system. Impress system means we are showing the separate accounts. इसमें हमारे पास ये नहीं होता कि एक साथ हम accountant को फाइनल अमाउंट बता दें, जबकि हम हर ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड करेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको बैलेंस सीडी और बीडी करेंगे. So this is your Impress system. Before starting a petty cash book, we must remember the three lines which we used to record, which we used to record in the start of the petty cash book. First of all, the name of the firm, then petty cash book, and then for the month of this is your January. So name of the company is Five Star Printing. Then petty cash book for the month of January. Okay, 2000 year is mentioned, 2004. This is the year they have mentioned. This is the year. Okay. Now, what you people have to do, you have to make your columns, which is already given in your manuals. Manuals में आप लोग के पास structure मौजूद है पैटी कैश बुक का, जिसमें आप लोग के पास डेट पर्टिकुलर्स देन हमारे पास सबसे पहले रिसिप्ट कॉलम, फिर डेट कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, देन वाउचर एंड टोटल अमाउंट. ये कॉलम्स आपके पास अवेलेबल होंगे. देन डेफिनेटली आप लोग के पास जो एक्सपेंसेस के कॉलम है, सम टाइम वो क्वेश्चंस में गिवन होते हैं एंड सम टाइम इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. But here in this question, I will go through the required. First, record the above transaction in the petty cash book and enter the amount reimbursed. Reimbursed का मतलब होता है जो पैसे हमें वापस मिले on February 2004. जितने पैसे आपके remaining बच जाएंगे by having these the following expenses. Expenses की जिसके जितने expenses के आपको recording करनी है, जिसके आपको कॉलम बनाने हैं, वो कॉलम आपको नाम उन्होंने दिए हुए हैं. सो द नेम्स ऑफ द कॉलम जो कि आपको अपनी पैटी कैश बुक में शो करने हैं, वो कौन कौन से हैं? पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देन ट्रेवलिंग, क्लीनिंग, स्टेशनरी, व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस. दीज आर योर मेन एक्सपेंसेस. अच्छा, जो उन्होंने आपको गिवन दिए, इसके अलावा भी आप चाहें तो कोई अपना कॉलम बना सकते हैं. प्लस एक लास्ट कॉलम जो मैंने आपसे उससे कहती हूँ, मिसलिनियस का कॉलम बना दिया करें. हो सकता है सम टाइम मिसलिनियस के कॉलम में कोई भी एक्सपेंस ना जाए, बट फॉर द सेफ साइड हम मिसलिनियस को कॉलम बना लेते हैं, ताकि अगर एट द एंड इनमें से कोई एक्सपेंस जिसका कॉलम हमने ना बनाया हुआ हो, उसको हम मिसलिनियस में रिकॉर्ड कर सकते हैं. मिसलिनियस के अंदर आपका हर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो सकता है. ओके. Now I proceed towards the question. On January 1st, 2004, they have issued a check for petty cash fund, which is the amount 3,000. So the amount of the cash which is issued to us, that is the 3,000, and which will be right on the receipt side. हम उसको अपने receipts में लिखते हैं, ठीक है? And receipts will be right on your on the left hand side. Please wait. Yes, I will show you the solution also here. Yes, receipt will be on your
लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट इन द डेट जनवरी 1st। जनवरी 1st के ऊपर 2004 पहले ईयर लिखिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन में आपके पास ईयर नहीं लिखा हुआ। 2004 एंड देन January 1st ऐसे करके लिखिएगा, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको शो किया था। 2004 January 1st, then you will write the receipt, which you the amount which you have received, and it is received in cash. Okay, so this is your opening balance। कि अब आपने सारे जो expenses करने हैं वो इस 3000 में से सारे expenses आप लोगों ने करने हैं। Now, after this 3000, we have another expense paid for postage. I'm requesting you all to kindly solve this question a little bit faster and in your manuals with me, so that you people will be more confident. So, students, you have to follow the procedure of the petty cash book. On January 2, we have paid for the postage is amount 180. The recording will be particulars postage. Then amount will be in the total column 180, एंड अमाउंट जो हम टोटल कॉलम में लिखते हैं उसको हम पोस्टेज के भी कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इन सब में से पोस्टेज का कॉलम कौन सा है बेटा, फर्स्ट वाला है, दिस वन इज 180। सो वी विल राइटिंग दिस अमाउंट इन अवर टोटल कॉलम ऑल्सो एंड इन अवर पोस्टेज कॉलम ऑल्सो। Total column will give you the figure of all the expenses which you have done, or different expenses, ठीक है, all the cash you have spent on your different expenses, ठीक है। So in the number third, paid for traveling, that is your 120। so we have paid for the traveling amount is 120। now we have to go through in the next transaction. This is your traveling, we have paid in particulars for the traveling, okay, and then amount is paid 120, and then we are writing in the traveling column. You can see in this question there is no voucher number, so voucher number is not available, clear? So this number is not available, voucher number, so we are not writing the voucher number over here, so it will be leave as a blank, clear? Okay. Now we have another one। आफ्टर ट्रैवलिंग भी है पेड फॉर द क्लीनिंग। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ फास्टर गो थ्रू कर रही हूँ, होप सो रिकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ गई है। मैं थ्री ट्रांजेक्शन्स को एक साथ पढ़ती हूँ, फिर हम लोग गो थ्रू करेंगे। पेड फॉर द क्लीनिंग इट्स 150, पेड फॉर पेट्रोल फॉर डिलीवरिंग वैन 220, अगेन पेड फॉर ट्रैवलिंग इज 250, ओके। so we are here, paid for the cleaning amount is 150 in the total column also, and in that cleaning column also, this one. Then paid for delivering van is 220, and here also in the vehicle repair and maintenance 220, it is also over here. So it is very much clear that whatever the expense you are recording, you should record in the total column and in the respective column of your expense also. Another we have traveling. So traveling is amount 250, and then you have to pay in you have to write it down in the traveling column also. So here I have mentioned, clear? Then we have stationery. Okay, stationery I have spent on rupees 170. So here also in the total column and then in the stationery column, I proceed over here. Okay, paid for cleaning it's 180, paid for postage rupees 50, then paid for traveling again rupees 90, paid for stationery rupees 230. What I have done simply that I have recorded for the cleaning is 180, then in the cleaning column over here, then postage at 50 in the 50 in this first column, then traveling on the total column also, and in the column of your expense traveling. So it is very easy, very simple questions, no such tactical part. It is just you have to read the question from your book, and you have to post it in your manuals of accounting. And then we have cleaning as rupees stationery of rupees 90 in the total column, and then in the stationery column, this one you can see the column should be correct. Then cleaning is 230, it should be in the total column and then in the cleaning column, clear? So you can see your lines of cleaning column जिससे 230 आपने total में लिखा है, बिल्कुल उसी
आपने रॉ में जाते हुए क्लीनिंग के कॉलम में लिखना है, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है। मींस बोथ द अमाउंट्स, अगर मैं यहाँ पे 90 मेंशन कर रही हूँ तो टोटल में भी मेरे इसके सामने ही बिल्कुल ये अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है। जैसे नेक्स्ट हमारा है पोस्टेज, 130 टोटल में है, तो हमारे पास उसी की लाइन में आपके पास पोस्टेज के एक्सपेंस कॉलम में भी 130 उसके सामने ही है। ठीक है। डिलीवरी मैन सर्विस 430, सेम इसी रॉ में हमारे पास हम स्ट्रेट जाएंगे और आपको डिलीवरी मैन इस एक्सपेंस में इस एक्सपेंस के कॉलम में 430 आपने रिकॉर्ड करना है। तो सेम उसी रॉ में आपने टोटल कॉलम को भी रिकॉर्ड करना है, टोटल अमाउंट में भी रिकॉर्ड करना है, आगे पीछे नहीं कीजिएगा बेटा। Then we have last four expenses is your petrol, which we have paid for the 180 rupees. And then over here also, then we have cleaning 210 in the total column. Then again in the total cleaning expense, then postage 50 over here also and here also. And then petrol I have paid for 140 rupees. It is also over here in vehicle repair and maintenance. पेट्रोल को देखें इन्होंने मेंटेनेंस कॉलम में डाला है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस अगर आपने फ्यूल का कोई अलग कॉलम नहीं बनाया तो लास्ट में एक अपने पास मिसलेनियस का कॉलम बना लिया करें, तो जिसमें कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि हमें किस कॉलम में रिकॉर्ड करना है, आप उस कॉलम में उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं बेटे। ठीक है। Now, what is the rule after recording all the transaction? I must follow the rule, but before following the rule, I am coming toward your participation section. Okay. Is the main part of the closing of the petty cash book. What is the procedure for closing the petty cash book? I ask you people that first you have to do your vertical calculations. Okay. Vertical calculations means you have to record every transaction vertically. So first of all, you have to do the vertical calculations over here. Okay. Of this one also, all the vertical column you have to do the calculations of all the columns in vertically. Okay. So record every transaction vertically, इसको vertical calculate कर लें इन सबको, सारे columns को आपको vertical calculate करना है, हर गया। So on the vertical calculations of the total amount, we have received the amount 2860. Kindly you have to solve it by yourself, अपने personal calculations कीजिएगा, so that you people will be more confident when you have solved the question by yourself. Your amount will be 2860 by the vertical calculation, and in the postage expense you get the amount 410. In the traveling you get the amount of 450. Then in the cleaning column you get the amount of 770. Then the stationery column you get the amount of 260, and in vehicle repair you get the amount of 970. After doing all the vertical transaction, you have to do the horizontal transaction of this column also, sum of all the columns. Okay. So the sum of all the horizontal calculations and the vertical calculation. ठीक है। मैं आप लोग को एक दफा बताती हूँ, रुकिएगा, wait for a while. Hmm, Wait, I'll let you know what I mean to say this. Yes, you can see here. Yes, you can see here this column is the vertical totaling. The vertical totaling of your total column is 2860, and then the horizontal totaling of this column is 2860. So the totaling of your vertical column and the totaling of all the horizontal columns should be equal. Okay, this should be equal. What I'm saying, that this amount after the vertical and horizontal. Okay, so the vertical totaling, the vertical totaling and horizontal. Okay, totaling should be equal. Okay, this is the main point. If it is not equal, then definitely you have made some mistakes in your recording of transactions. Okay, so make sure that you will not do any mistakes in your vertical and horizontal totaling. Now
After doing vertical and horizontal totaling, you have to subtract 2860 from this column, from 3000 amount. Okay, from the cash received you have to minus your totaling 2860 to get the amount of balance CD. Okay, so 3000 minus 2860, the amount is 140. Clear? So this amount of 140 will be your balance CD. Clear? Then you have to close the amount of the biggest number, so 3000 and 2860. Which one is the biggest? Definitely your cash receipts is biggest, so you have to close the column with your biggest amount, that is your 3000, and it should be in the same line. Okay, this should be in the same line. This 3000 in the cash receipt side, and this 3000 in the total amount side, and it should be in the same line. Now, after writing the biggest amount and doing the closing of and the footing your transactions, you have to put the double line. This shows that you have closed your accounts. Then you have to write it down, balance brought down. So balance CD amount should be in the total amount, and balance BD amount is below your cash receipts. Okay, so it should be on your cash receipt side, that is your balance sheet is 140, and on cash receipts it is 140 over here. Clear? So this amount is your CD, this one is your CD, and this one is your BD. Amount is same as 140. Clear? And this is 2860. We have shown this, that this is the amount of cash we have done the expense. Clear? So the here they have shown the 3000 is the total amount which is given, and we have 140 is our balance brought down, from which next month will be start. मतलब इस महीने के बाद वाला फरवरी के बाद जब आप मार्च का मंथ स्टार्ट करेंगे, तो 140 will be your balance brought down, and then you will receive the cash from the accountant for your petty cash book. And then this is the amount of expenses, so 2860 plus 140 is your 3000, and this is the closing of your petty cash book. So this is very much easy. Hope so you all have done your closing also. Now, yes, after recording all the transactions and closing of the accounts, we should follow towards the journal of the petty cash book. So we have three journal of the petty cash book, three types of, you can say, three ways of recording this petty cash fund. It is very much easy. Okay, now we have journal entries for the petty cash book. Yes. This is your first journal entry. We will record the after recording the petty cash book. We after maintaining the petty cash book, we will record the three transactions. And what are these three transactions? Number one, we always record to issue the check. The first transaction हमेशा petty cash book में आपकी बनती है issued cash fund की, ठीक है. Second transaction आपकी बनती है payment of expenses. Clear? And then लास्ट आपकी बनती है reimbursement of the petty cash fund. मीन्स जितने भी आपने पैसे खर्च किए हैं अपने कैश में से, आप उसी को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो पहली अमाउंट क्या है कि आपको टोटल चेक अकाउंटेंट से मिला कितने का था सारे पेटी कैश फंड के लिए. आपको 3000 का कैश मिला था, सो इट शुड बी योर कैश डेबिट. पेटी कैश फंड आपको मिला एंड योर बैंक क्रेडिट, बिकॉज बैंक में से आपको अकाउंटेंट ने चेक दिया था. सो पेटी कैश फंड विल बी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट व्हेन यू आर इशूइंग द चेक. देन सेकेंडली, जो आपकी रिकॉर्ड होगी, इसकी डेट भी देख लीजिए. जब आपको चेक मिला था तो उस वक्त डेट 1 जनवरी थी. जब आपने सारे एक्सपेंसेस कर लिए तो 31 जनवरी आपकी डेट हो गई. यू विल रिकॉर्ड द टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस. आपने यहाँ पे वो ये वाले रिकॉर्ड करना है. ये वाली अमाउंट जो 410, 450, 770, 260 एंड 970. ठीक है, आप ये वाली जो हमारे पास, जिससे हमने टोटल अपने एक्सपेंसेस को क्लोज किया है, ये वाली अमाउंट्स इंडिविजुअल लिखिएगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्री फॉर द एक्सपेंसेस. It's 410, 450, 770, 260 and 970. These are all your expenses which you have done. और जर्नल एंट्री क्या बनती थी एक्सपेंसेस की, आप सबको पता है. हम यूजली जर्नल एंट्री एक्सपेंसेस की क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंस विल बी डेबिट, ठीक है, एंड कैश क्रेडिट.
हमने यहाँ पे यही वाली जनरल एंट्री रिकॉर्ड करी है, एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट. ओके, सो दिस जनरल एंट्री ऑफ expenses, all your expenses will be debited and your cash fund will be credited. So this is all your expenses. You can record all the expenses journal entries over here which I have mentioned right now. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा जो नेक्स्ट एंट्री है वो याद रखिएगा, जब हमारे पास फर्स्ट एंट्री आपने रिकॉर्ड करी है तो वो आपके पास है इशूड चेक. ओके, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए जिससे मैं आप लोग को शो कर रही हूँ. इशूड चेक इज योर फर्स्ट एंट्री. Okay, I'm writing on the screen. Please note it down. Then second entry is your payment of expenses. You have to write it down in your registers. Payment of expenses. Then third entry you have to do for the closing, or this is called reimplish. Reimplish is the closing of your expenses कि जितने आपने को पैसे आपने close किए. So reimplished of your wait. Hmm, reimbursed of your expenses. ठीक है, reimbursed of cash. Clear? So this is your first entry where you received a check on January 1st. Then on January 31st we have all the expenses, debit and cash credit. Then in the last entry, what you have to do, the first entry and the last entry will be the same. Sorry. Sorry girls. Yes, the first entry and the last entry will be the same. uh, and then the last entry will be the closing. Okay, now what you have to do, total amount of expenses which you have done this 2860 of 1st February. So here they have mentioned you the 1st February 2860, and we are recording this transaction over here on 1st February. We have petty cash fund debit and bank credit. So we have this transaction and this transaction, these two transactions will be your same. Okay, now okay girls, this is your journal entry for the petty cash fund which we have discussed in the today's class. Now this is the complete topic of the petty cash book, which needs to be understand, and inshallah for the board's perspective you will only get the requirement part is prepare the petty cash book and only to record the journal entries of the petty cash book. So this is all about the topic of petty cash book. इसके अलावा आपके पास पैटी कैश बुक का कोई और क्वेश्चन भी नहीं है, कोई और मेथडोलॉजी भी नहीं है, और कोई और रिक्वायरमेंट भी नहीं है. सो यू ओनली हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर रिकॉर्डिंग योर कैश पैटी कैश बुक इन दिस वे एज वी हैव डन, and this these three journal entries which I told you. Okay, kindly ये जो मैंने आप लोग को भी लिखवाया है, your expenses debit and cash credits को नोट डाउन करें. जो आपके पास थ्री टाइप्स की जर्नल एंट्रीज आती हैं, नंबर वन इशू चेक, नंबर वन इशू चेक, नंबर टू पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड नंबर थ्री रिम्प्लेस्ड ऑफ कैश. ठीक है, हमारे पास पहली जनरल एंट्री जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, रिसिप्ट जनरेट हुई है, so this will be your petty cash fund debit bank credit. Second entry जो 31st की बनेगी is the recording of all your expenses and then cash credit. And then आपके पास जो 1st February को आपने ये शो करना है कि आपने एक्सपेंस किस चीज़ पे किया, तो आप लिखेंगे 2860, ये आपके एक्सपेंसेस हैं. तो आपकी फर्स्ट एंट्री जो कि 1st जनवरी को थी वो 3000 की थी. जनरल एंट्री सेम वही है, और फेबररी फर्स्ट में आपने बताया कि आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं उसकी अमाउंट 2860 है. क्लियर? सो डेफिनेटली जब आपने बताया कि 3000 आपके पास थे, 2860 का आपका एक्सपेंस हो गया, तो आपके पास फेबररी फर्स्ट का ब्रॉड डाउन भी आ जाएगा. So this is the complete topic of petty cash book. Hope so you people understand and grasping the words of the lecture and understanding of the topic. Thank you so much.